How are you doing? So let's come to the point. And I think in the last class we have discussed about the responsibility of an subagent and how what is the duty of the employer or the agent when there is the subagent, and how the subagent is responsible for the act of the agent and how the agent is responsible for the act of the subagent. Those things we have discussed in the last session. Okay. So in today's session we are going to discuss section 224 onwards, that specifies that what are the responsibility of the agent to indemnify a subagent when there is the necessary. Okay, just 1 second. Let me open the section first. Okay, so we are going to complete this portion of the agency today, and we'll start from the portion of the section 224 today. And under section 224, as we have got a bit hint about the last class, that exactly speaks about the non liability of the employer of agent to do a criminal act. Okay, so for example, I am the principal, okay, and I am appointing you as my agent. Okay, so when you are working as my agent, it is your responsibility to do, to handle, to conduct all the activities, all the acts in a decent manner with a proper legal procedure. Okay. So when you are not following the proper legal process, when you are breaching your proper responsibility, or when you are doing certain kind of the criminal act, then in that circumstances, as an employer, am I liable for your those acts? The answer is two types. It is yes and it is also no. The first answer is if it is done with the instruction of the principal. If as a principal I have instructed you to do so, if I have given you permission to do so, that do this and this is your responsibility to do the task, and if you are appointed by me to do that criminal act, then yes, I'll be responsible for your act. But yes, if it is the unauthorized act by me, if it is the act like where I have not been authorized you that go and do this, but still without my permission you are doing that, then in that circumstances I will not be responsible for my activities. Got it? So this is the liability of the employer if the agent does a criminal act. But yes, the point is, if the employer is non breaching the conditions, then in that case the employer is not liable to indemnify the employee for the specific activity. I am giving you an example of this. You have heard about the game of the betting, जहाँ पे जुए का जो खेल होता है ना, जुए में हम क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं. ओके, तो मान लो कि आपने 10,000 रुपया लगाया, वहां पे आपका 10,000 रुपया डूब गया. तो जुए में अगर आपका 10,000 रुपया डूब जाता है, क्या आप उसी को जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा जुए में पैसा डूब गया है, ये इंसान मेरे को जुए में 10,000 लगाने को कहा, अभी मुझे पैसा वापस नहीं दे रहा है, क्या आप अब जाके वो कंप्लेंट पुलिस में कर सकते हो? नहीं कर सकते. दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स अंडर सेक्शन 224. It speaks about the non-liability of the employer of agent to do an criminal act. When there is a agent, अगर मैंने आपको एज एन एजेंट अपॉइंट किया है, आप मेरा एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हो, and what you are doing during my course of business, during your course of business, आपने कुछ क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक चोरी करने के लिए अपॉइंट किया हुआ हूँ, या फिर मैंने आपको किसी का किडनैप करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, एंड वी हैव ए डील कि अगर आप एक बच्ची को किडनैप करके लेके आओगे, देन आई एम गोइंग टू पे यू 5,000 ऑफ द रुपीज. एंड अगर उस चीज पे एज एन एम्प्लॉयर और एज द प्रिंसिपल मैंने आपको 5,000 रुपया नहीं देती हूँ, कैन यू स्यू मी इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि मेरे को किडनैप करने के लिए जो डील मिला था और मैंने किडनैप कर लिया और मेरे को पैसा नहीं मिला? यू कैन नॉट. एंड हियर you yourself given your permission to do a criminal act which you know that this is the criminal act.
आपको सही तरीके से पता है कि किडनैप करना, चोरी करना गलत काम है। आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये काम नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप कर रहे हो। हियर हियर द थिंग्स गोज ना। आपको पता है कि वो चीज गलत है, बट गलत होने के बावजूद भी आप उस चीज को बार बार करने पे इंटरेस्ट ले रहे हो। दिस इज योर ओन इंटरेस्ट टू डू ए क्रिमिनल एक्टिविटी, एंड उस चीज पे अगर एम्प्लॉयर आपको सही तरीके से इंडेमनिफाई नहीं करता है, एम्प्लॉयर अपने तरफ का कमिटमेंट सही तरीके से नहीं चुकाता है, then is the employee or is the agent liable to blame the principal in the court of law? The answer is no. The employee cannot bring the principal to the court for this activity. समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका सेक्शन 224 का, जस्ट लेट्स रीड द क्लॉज वंस अगेन. Where one person employs another to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent either upon the express or the implied promise to indemnify him against the consequences of the act. यहाँ पे अगर द प्रिंसिपल जो है, ओनर जो है, अगर वो पहले से आइदर थ्रू द एक्सप्रेस प्रॉमिस, आइदर वो पेन पेपर पे लिख के दिया है कि अगर तुम ये किडनैप करके लाओगे तो आई विल गिव यू 5,000 ऑफ द रुपीज, या फिर इम्प्लाइड क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई किसी को बोला नहीं है, बट देयर इज ए कमिटमेंट. सालों से मैं एक इंसान के लिए काम कर रहा हूँ, एंड मेरे को पता है कि मैं अगर इस काम करूंगी देन ही इज गोइंग टू पे मी दिस मच. सो देयर इज द इम्प्लाइड एग्रीमेंट मी एंड माई एम्प्लॉयर दैट अगर मैं ये काम करती हूँ तो मेरे को वो चीज मिलेगा ही मिलेगा. सो किसी भी तरह का अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए किसी भी तरह का कमिटमेंट कर दिया है, बट दैट एक्ट इज क्रिमिनल इन नेचर, एंड वो अपना कमिटमेंट नहीं निभा रहा है, देन इन दैट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस द एम्प्लॉई और द एजेंट हैज नो responsibility, no liability, and no right to sue the principal for the activity because the wholesome act is a criminal act in nature. Clear? Then comes section 225. It speaks about the compensation to agent for injury caused by principal's neglect. What does it mean? It means when the principal must take the compensation to his agent in respect of the injury caused to such agent by the principal neglects or want of skill. अगर एजेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपना एजेंट के हिसाब से अपॉइंट किया हुआ हूँ, ओके, तो आप मेरा एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हो. मान लो देयर इज सर्टन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जिसकी के वजह से आपको इंजुरी झेलना पड़ा, एंड आई एम लाइबल फॉर दैट बिकॉज वहां पे उस चीज के लिए जितना प्रिकॉशन लेना चाहिए था मैंने नहीं ली. क्यों नहीं ली? ड्यू टू माई नेग्लिजेंस. सो हियर अगर आपको कुछ हो गया, अगर आपको किसी भी तरह का नुकसान हुआ, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल ओवर हियर. मेरे को सारी चीज का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मान लो मेरा एक खुद का एक कंपनी है. उस कंपनी में आपका जो होता है ना, ब्रिक्स का प्रोडक्शन का काम होता है, राइट? तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जिस मशीन पे आपका ब्रिक्स तैयार होता है, ब्रिक्स का ढांचा जिस मशीन पे बनता है, उसी मशीन का टेक्निकल सिस्टम में कुछ गड़बड़ है. वो बात मेरे को आप लोगों ने 3 महीने पहले भी बता चुके हैं, 1 महीने पहले भी फिर से बताए हैं, बट आई एम लाइक मैं इस चीज को लेकर काफी नेग्लिजेंट हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. आई एम लाइक ओके फाइन, ठीक है, ठीक कर देंगे, उसको ठीक करवा देंगे. बट मान लो ऑल ऑफ ए सडन इन अ स्पेसिफिक डे आपको मेरे वजह से नुकसान हो गया. ब्रिक मशीन का ये जो इंटरप्शन है, कुछ गड़बड़ था, उसके वजह से यू लॉस्ट योर हैंड और आपको किसी भी तरह का चोट पहुंच गया. सो हियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट?
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। यहाँ पे ये सारा जो एक्सीडेंट है ना, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे जाएगा? मेरे सर पे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, दिस इज द सिचुएशन लाइक आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू। अगर मैं चाहती, अगर मैं थोड़ा सा नेग्लिजेंट नहीं बनती, तो शायद ये नुकसान अब आज आपको नहीं झेलना पड़ता। अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, एम के बी की वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, उसी का एक लाइव एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आपको पता है कि जो मतलब देर वाज ए, जो स्पेसिफिक जो दो गैस लीक हुआ था ना, उस मतलब देयर वाज ए वेरी बिग इंडस्ट्री ओवर देयर। उसी इंडस्ट्री का सिस्टम में कुछ दिक्कत थी। एंड वहां पे जो टॉक्सिक जो पॉइजनस गैस है, उसी को एक टैंक पे ना फुल करके रखा जाता था। सो हुआ है कि उसी का जो टेक्नीशियन है, उसने कंपनी का अथॉरिटी को बार बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार पहले भी बोल चुके थे कि ये टैंक का सिस्टम में गड़बड़ है, इसी को ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, बट उन लोगों ने किया नहीं। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब चीजें ज्यादा बढ़ गई, टैंक फट गया, गैस लीक कर गया और 100 लोगों का जान चली गई। आज तक भी लोगों यहाँ पे विकलांग होके पैदा होते हैं, वहां पे आज तक भी उसी गैस ट्रेजेडी का इफेक्ट चालू है। तो यहाँ पे जो देखा जाए ना, दिस इज द क्लियर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। जहाँ पे कुछ चीजों को हम सुधार सकते हैं, वहां पे सुधार लेनी चाहिए। अगर हम नहीं सुधार रहे तो वो हमारा गलती है। And that is why the principal is the person who should take care of everything. अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, ऑफ माई स्टाफ, ऑफ माई एम्प्लॉई, एंड टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर मेरा लोहे का कारखाना है तो वहां पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा हर एक स्टाफ को लोहे का प्रिकॉशन के लिए जैकेट प्रोवाइड करना, ग्लास प्रोवाइड करना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना। और अगर मेरा धूल मिट्टी का कोई मतलब दूसरा कारखाना है जहाँ पे मान लो कि ईटा का ब्रिक का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आपका दूसरा किसी भी चीज जहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा आपका होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कटन। जहाँ पे कटन इंडस्ट्रीज होता है, वहां पे क्या होता है ना, कटन का जो छोटा छोटा मतलब माइक्रो कटन्स का जो होता है, दाना होता है, दैट कम्स थ्रू आवर सेंसेस। हम जब सांस लेते हैं वो अपने अंदर जाता है, एंड दैट कॉजेस कैंसर। तो उसी टाइप का इंडस्ट्री पे दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, कि वो इस चीज का ध्यान रखे कि लोगों का सांस का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए, उनको अच्छी तरह से सही ढंग का मास्क प्रोवाइड किया जाए, उनको का आंखों का प्रोटेक्शन के लिए चश्मा प्रोवाइड किया जाए। So where this is the responsibility of the employer, or this is the responsibility of the principal to take care of the thing, but the principal is being negligent to the act, then in that specific circumstances, what will happen? The principal have to compensate the agent for his negligence or for the injury caused. Okay? तो ये हो गया आपका 225। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? ओके, सो देन कम्स सेक्शन 226। इट देन कम्स अबाउट द एनफोर्समेंट एंड consequences ऑफ द एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड सेक्शन 226 बोलता है कि एजेंट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एनफोर्समेंट एंड consequences क्या है। Let's read it out once. Contracts entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner, and we have the same legal consequences as if the contract had been into the acts done by the principal in person. Okay. So, whenever we are talking about section 226, if we are summarizing it, then what will be it mean? It will mean that contracts made by an agent on behalf of the principal have the same effect as if they were made by the principal directly. That means if there is a agent who is working on behalf of the company, it will be considered that as if the company has directly done that sign.
For example, I am here over a representative of a company. Okay, so my company is not present at the specific place, but I, as the representative of my company, representing my company only, and all my activities over here will be considered as the activities of the company only. Got it? So when we are talking about the enforcement and the consequences of the agent's contract, what does it mean? It means when there is the contract by the agent, when there is the enforcement of the contract by the agent, in that specific circumstances, the owner is equally responsible for the contract done by the agent if the owner has permitted the specific person to act like an agent. Got it? So, let me make it more clear through a clear example. For example, I have appointed you as my agent to do a specific deal uh, worth over 50,000 of the rupees. Okay, मान लो कि मैंने आपको एक डील के लिए भेजा है जिसी का जो अर्थ है 50,000 ऑफ द रुपीज है. सो यू हैव टू carry the official documents, you have to do the proper signature over there, you have to follow the proper rules and regulations over there, you have to do every single thing over there. Okay, so when you are doing your activity, you are doing that activity not on with your name, with your company name. When you are signing the document, there you are putting the signature of the company. When you are doing the specific draft, instead of putting your own document, you are putting the name of the company. So here you are doing your better effort to show it that you are not the single person here, you are the company here. यहाँ पे जो पूरा कंपनी हुए ना, you are representing the specific company. और योर मास्टर, आपका जो ओनर है ना, आप उसी को रिप्रेजेंट कर रहे, यू आर प्रूविंग इट आउट. एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी कंसिडर्ड that when there is the enforcement of the agent's contract, it will be considered as the enforcement of the specific person. जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट होता है, then it will be considered that यहाँ पे एजेंट के थ्रू जो भी डील हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, those all activities has been done. Okay, then comes section 227. What does it mean? Principal how far bound when agent exceeds authority. What does it mean? When an agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond the authority, so only if what he does as within the his authority is binding between him and his principal. Okay, so when we're talking about section 227, what does it mean? It if an agent does an authorized and unauthorized acts in a deal, only the authorized part is binding on the principal and the unauthorized act is not binding on the principal. Got it? 2 minutes, guys. Let me have some water. Okay. So, हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? Enforcement and the consequences of the agent's contract. And यहाँ पे, as I told you, that when there is the contract by the agent, it will be considered that it is the contract by the principal only if that person is specifically appointed and authorized by the principal to do the specific activity. Clear? Then comes section 227. What does it mean?
Principal how bound when agent exceeds authority. And section 228 says principal not bound when the excess of agent's authority is not separable. See, section 227 and 228 नीड टू बी रीड टुगेदर. ये जो दोनों सेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपका एग्जाम पे भी आ सकता है. सो वी हैव टू रीड इट टुगेदर. पहला चीज क्या बोला हमने कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अपॉइंटेड यू एज माई एजेंट. आप यहाँ पे मेरा एजेंट हो, यू आर वर्किंग फॉर मी. ओके, सो ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ बिजनेस आई हैव अपॉइंटेड यू फॉर समथिंग, but after doing that specific act, you are doing something for which I have not authorized you. Got it? So, as a principal, I have my right to accept the thing which I specifically want and to reject the things which I do not want. Just take an example how to express it. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे अपॉइंट किया है टू सेल माई कार. मेरा एक कार है, उसी कार को बेचने के लिए आई हैव अपॉइंटेड यू. बट देयर इज ए सिस्टम ऑफ द म्यूजिक सेट. वहाँ पे एक बहुत ही महंगा मेरा म्यूजिक सेट कार पे लगा हुआ है एंड आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू कि वो म्यूजिक सिस्टम को कार से पहले रिमूव करना, फिर कार को बेचना. Because I want to sell the car, but I don't want to sell my music system because that is very expensive product for me and I don't want to sell it. But what you did, you not only sold the car but also sold the music system. कार के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम भी आपने बेच दिया. यहाँ पे you did two acts. पहला आपने कार बेचा, दूसरा आपने मेरा म्यूजिक सिस्टम को बेचा. सो आई हैव ऑथराइज्ड यू टू सेल द कार. कार का सेल करने के लिए मैंने आपको हाँ बोला था, बट मैंने आपको म्यूजिक सिस्टम बेचने के लिए परमिशन नहीं दिया था. सो हियर योर स्पेसिफिक एक्टिविटी टू डू दैट स्पेसिफिक एक्ट, कि आपका वहां पे आपने जो मेरा म्यूजिक सिस्टम को बेच दिया, उसी वो काम करने के लिए डिड आई परमिट यू? द आंसर इज नो. सो एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट? द आंसर इज नो. I'll be liable for the selling of your car but not the selling of your music system. And here you have to compensate me the whole amount of the music system which you have sold. मान लो the music system costs 2 lakh of the rupees, then you have to compensate me that amount. क्योंकि यहाँ पे जो system है ना, I'll be responsible for the selling of the car because that was within my permission. But selling the music system was not within my permission, and that is why you will be punishable or you have to compensate me for that unauthorized sale. And under section 228, what does it mean? It means if there is a specific act जहाँ पे principal is not bound when the agent's authority is not separable. अगर आपने ऐसा कुछ काम किया जहां पे आपका अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के साथ साथ आपका ऑथराइज्ड एक्टिविटी भी लिंक हो चुका है, देन उसी मामले में द प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल फॉर द होल एक्टिविटी. जैसे कि एज आई टोल्ड यू दैट सेल द कार बट नॉट माई म्यूजिक सिस्टम, बट यू डिडंट लिसन टू मी. Even if you have separated the music system from the car, you sold the car as well as the music system. So you have to compensate me or give me back that specific music system. Got it? But the problem is, there is a problem also, okay? For example, you have sold the music system along with the car, but there is a terms and conditions you have done with the person who purchased it, who is the customer. उसी के साथ आपने एक डील कर लिया कि ये कार के साथ साथ ये म्यूजिक सिस्टम भी मैं बेच रहा हूँ एंड मैं उसी को वापस नहीं मांगूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क इट अगेन. सो व्हाट विल हैपन इन दैट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस? अगर ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे ऐसा कंडीशन रखा गया है ड्यूरिंग द सेल ऑफ द कार कि कार के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम इज टोटली अटैच्ड एंड इट कैन नॉट बी डीअटैच्ड, देन हियर द ओनर और द प्रिंसिपल इज नॉट एट ऑल लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट. पहला सिचुएशन 228 पे 227 228 फिर से समझिए, अच्छे से समझिए इसको. 227 पे मैंने क्या बोला
अगर दोनों तरह की एक्ट होता है, जो एक्टिविटी हुआ है ना उसी का एक पार्ट जो है दैट इज कंडीशनल इन नेचर और दैट इज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिंसिपल, वो ऑथराइज्ड है। दूसरा हिस्सा जो है वो अनऑथराइज्ड है। पहला हिस्सा में मैंने कार बेचने को बोला था, वो ऑथराइज्ड था। दूसरे हिस्से में मैंने म्यूजिक म्यूजिक सिस्टम को बेचने को मना किया था, वो अनऑथराइज्ड था। सो यहाँ पे ओनर जो है, प्रिंसिपल जो है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग ऑफ द कार। पहला हिस्सा का काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, बट दूसरा हिस्सा का सेलिंग ऑफ द म्यूजिक सिस्टम ही विल नॉट बी लायबल। बट अगर ऐसा है कि कार के साथ साथ जो म्यूजिक सिस्टम को बेचा गया है, दिस टू आर अनडिवाइडेड इन नेचर, उसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, दिस इज अनसेपरेबल, then in that specific circumstances the owner is not liable at all even for the selling of the car. इवन यहाँ पे ओनर जो है ना वो कार का सेलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देयर इज एन अनऑथराइज्ड एक्ट व्हिच हैज नॉट बी परमिटेड बाय हिम। सो यहाँ पे इट विल बी कंसिडर्ड दैट द होल एक्ट हैज बीन नॉट डन विदाउट परमिशन। बट अगर यहाँ पे एक पार्ट है जो परमिटेड है, दूसरा पार्ट है परमिटेड नहीं है, एंड इट इज सेपरेबल इन नेचर, देन वहां पे जो पार्ट परमिटेड है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरा पार्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। बट अगर ऐसा है कि दोनों पार्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसी को अलग नहीं किया जा सकता है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस द होल एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज डन विदाउट परमिशन। वहां पे ये कंसिडर किया जाएगा कि दोनों एक्ट करने के लिए यहाँ पे एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं था। गॉट इट? सो ये हो गया आपका 227। देन कम सेक्शन 229 एंड 230। ओके, सो यहाँ पे 229 पे क्या बोलता है? प्रिंसिपल नॉट बाउंड इफ द अथॉरिटी इज एक्सीडेड। ओके, यहाँ पे 222 we have discussed, sorry. Then comes section 229. What does it mean? Notice to the agent is notice to the principal. This is what we have already discussed in details कि जहाँ पे किसी भी तरह का नोटिस इशू किया जाता है प्रिंसिपल को, इट इज नॉट अ नोटिस टू द एजेंट को, दिस इज ए नोटिस टू द प्रिंसिपल इटसेल्फ, बिकॉज if you are my agent, you are working for me, then if you are receiving any kind of the notice from anywhere, then who will be responsible for that? Then in that specific circumstances I will be responsible for that. Okay, that means when we are talking about that, there should be a notice which is provided to the agent. For example, there is a meeting fixed with the principal tomorrow, and instead of informing the principal, the committee has informed the agent कि आपका जो सीनियर है उनको बोल देना कि कल उनका 10 बजे एक मीटिंग है। सो यहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन डायरेक्टली पास्ड टू द प्रिंसिपल, बिकॉज एजेंट वर्क्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल, जहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है एंड प्रिंसिपल के सजेशन के हिसाब से काम करता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। गॉट इट? देन कम्स सेक्शन 230. What does it mean? It means agent not personally liable for the principal's contract. That means the principal, when he or she is working with the agent, till then it is fine. But after the work, okay, whatever the other modes of the contract of the principal, in that specific circumstances, agent is not personally liable for the principal's contract. Okay, then comes section 231, which exactly speaks about the right when the agent does not disclose the principal's name. And under that, we have already discussed that when it is about the disclosing principal's name, there are certain rules are associated with it. There are certain circumstances where the names
should be disclosed, and there are certain circumstances where the fact was not supposed to be disclosed. Okay, so when we're talking about the concept of the agency, and we have discussed the rights when agent does not disclose the principal's name. Here we have discussed that if the person dealing with the agent not to know the not to know the action against the agent is acting for a principal, the principal can still enforce the contract. Okay, that means when there is any kind of the deal or any kind of the agreement where the agent is instructed not to disclose the name of the principal, then in that specific circumstances, what will happen? In that specific circumstances, it will happen that the agent is not specifically responsible to disclose the principal's name, and still the course of business will continue with the name of the agent, but still the principal is liable for the action of the agent. Got it? This is about section 231, and section 232 speaks about the contract made with an agent without knowing exist. Okay, that means when there is a contract that is being done by the agent, and the person who has done the promise or done the deal, they even do not know, they even don't know that there is any existence of such principal. They think the agent as the principal. Okay, if a third party makes a deal with an agent believing that the cruel party, the principal, can claim the contract. Okay, but the third party retains the right against him. Okay, so for example, there is a deal between me and a foreign company, and I am traveling to abroad to attend the specific meeting or specific course of business, whatever it is. Okay, so when I am traveling to do that specific business, I have been specifically authorized by my principal to do that specific act. I have been specifically authorized, I have been specifically permitted by the principal to do that specific act, and I decided to do that. Okay, so when uh, I started doing my task, or I started doing my work over there, in that specific circumstances, I had been instructed to use my company name, but the other people over there who is doing the deal with me, they do not have a single idea who is the principal in this business. उनको इस चीज का अंदाजा तक भी नहीं है कि who is the principal. They think I am the principal because I am doing the deal. Got it? So this is the thing. Next comes your section 233, and here we have discussed about the personal liability of the agent. And under section 233, we have discussed if the agent is personally liable for a contract, the third party can sue either the agent or the principal or both. What does it mean? If the agent is personally liable under a contract, अगर एक एजेंट जो है वो एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनली लाइबल है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, then the third party can sue either the agent or the principal or both. Then in that specific circumstances, say if there is any party who has suffered the losses, he can either sue the principal, he can either sue the agent, or thirdly he can sue the both. Okay, so when I am talking about the personal liability of the agent, then we need to understand that the agent who is personally liable for a contract, the third party can use either the agent or the principal. Then in that specific circumstances, say if there is any party who has suffered the losses, he can either sue the principal, he can either sue the agent, or thirdly he can sue the both. Okay, so when I am talking about the personal liability of the agent, then we need to understand that the agent who is personally liable for a contract, the third party can use either the agent
or the principal or both. Okay. Then comes section 234. It speaks about the including belief of the exclusive liability, which is explained under section 234. Okay. Then comes section 235. It exactly speaks about the liability of the pretended agent. This is the most interesting section ever. So here it is given that if someone falsely claims to be an agent and convinces a third party to enter into a contract, the the principal or the person is responsible for compensating the third party over here. Okay. So how does it mean? It means when there is a person who is pretending as the agent but he is not the real agent. समझ में आ रहा है? There is a person who is not a real agent but that person is pretended to be an agent. Then in that specific circumstances, if the person falsely claims to be an agent, if the person says that yes, I am the agent, I am doing my activity, and the person is convincing the third party to enter into the contract, that person is responsible for the compensating the third party. In that specific circumstances, the person will be capable or liable or responsible to compensate the third party. Okay. Then comes सेक्शन 235 का जो मतलब देयर इज अ सेंटेंस, लेट्स रीड इट आउट. इफ समवन falsely claims to be an agent and convinces a there is a and convinces for it, then in that specific circumstances this is the basic responsibility or basic duty of the owner or the uh, mm, or the person who is the employer. Okay. To check it out that the employment is actually right or wrong. Okay. So when there is a person who falsely claims to be an agent, when the person is falsely saying that she is an agent or he is an agent and he is not an agent, and the person, what he is doing, he is responsible for the for compensating the third party. यहाँ पे he will be responsible to compensate the third party. Got it? Then comes section 236. Okay. So under section 236, we will discuss that no right to enforce contract by the false agent. And under that section, we have understood that when there is the false agent is present in a contract, then in that specific circumstances there should be no enforcement of any kind of the contract will happen. Okay. And under section 231 we will discuss the rights when the agent does not disclose the principal name. When there is a right where the principal is not disclosing the principal's name, then the person has the right to disclose the fact. But yes, another thing that if there is the misrepresentation, mistake, or fraud by the agent, in that specific circumstances, the principal is not liable for that specific act of the agent, or the principal is not liable to compensate the third party for the losses occurred due to this activity. Got it? So these are the basic provisions about the agency. About the further section onwards, from section 232 or 33 onwards, we are going to discuss in the next class, I guess. We can close the class here. Then we're meeting for the next class in 10 minutes for the TP Act. Okay, guys. So I'm wrapping the class over here. Bye bye.